हेलो डॉक्टर्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है कोच मिस्टर में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया एएमसी क्लिनिकल एग्जाम यानी कि एएमसी पार्ट 2 को डिटेल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम एक कदम पीछे लेकर ये देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। वैसे तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कहाँ मूव करना चाहते हैं और कहाँ जाकर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, बट वी मस्ट टॉक अबाउट द पैरामीटर्स दैट इन आवर व्यू makes Australia a perfect destination for healthcare professionals. Even though India is a large country with massive population of 1.4 billion, yet somehow medical graduates are struggling to get a decent job. Let's just have a look at the headlines of Hindustan Times and CNBC. But things are different in Australia. As per the Royal Australian College of General Practitioners, the demand for general practitioner is expected to grow by 58% by 2031. This massive demand for doctors is because of the aging population in Australia. Close to 18% of Australians falls in the 65 years age bracket, and they need more medical care than young people. If you are just an MBBS graduate, you would hardly receive a salary of 30 to 40k per month in India. Just imagine all the hard work one has to put to become a doctor in India. सबसे पहले तो आपको नीट एग्जाम को क्लियर करना होगा, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोई आसान काम नहीं है। और उसके बाद आपको अपने लाइफ के 4 साल कॉलेज को देने होंगे। और इंडिया की कॉलेज लाइफ इतनी आसान नहीं होती, पर मुश्किल जरूर होती है। और तीसरी बात, फिर आएगी आपकी 1 साल की इंटर्नशिप, और तब जाकर मिलेगी आपको एक MBBS की डिग्री। और इतने एफर्ट्स लगाने के बाद when you do find a decent paying job, you do not feel very excited about being a doctor. You think it's not financially rewarding. Whereas in Australia, the salary of a doctor at an entry level position is around 120,000 Australian dollars. If you consider the fact that you have to pay 47% of income tax on your earnings, even then you make a great living. Food for thought. अब बात करते हैं वर्क प्रेशर कितना है। डॉक्टर शाहीन, one of the community members of Coach Minister, mentioned when she worked in India, she used to work in a 12-hour shift. She didn't get off on weekends. Also, अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तब तो there is another dimension of pressure that you experience from patients, their relatives, and hospitals do nothing to help young doctors. In Australia, your shift is defined. You'll have to work 35 to 40 hours a week only. And if you work overtime, you get paid extra for your time. अब आपको कुछ जनरल पॉइंटर्स भी बताता चलूं। Australia is a great place. Healthcare, education, work-life balance, everything is of top-notch quality. Life in general could be pretty chilled out and good. Before we end this video, I want to share the list of top 10 hospitals in Australia to work as a doctor. First, Calvary Hospital at Canberra. Second, Bairnsdale Regional Hospital at Bairnsdale, Victoria. Third, Royal Darwin Hospital and Darwin Private Hospital at Darwin, Northern Territory. Fourth, Albury Wodonga Health and Albury Wodonga Private Hospital at Albury Wodonga, Victoria. Fifth, Mount Gambier Hospital at Mount Gambier, South Australia. Sixth, Broken Hill Base Hospital at Broken Hill, New South Wales. Seventh, Launceston General Hospital, Launceston, Tasmania. Eighth, Kalgoorlie Western Hospital, Kalgoorlie, Western Australia. Ninth, Swan Hill District Health, Swan Hill, Victoria. And 10th, Bathurst based hospital, Bathurst, New South Wales. That's all for today's video. I hope you liked it. अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी उनका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय।